let's have something from the canteen or cafeteria, right? Now वो सेम ब्रेकफास्ट के साथ जब दही ऐड होगा या पनीर ऐड होगा या एग ऐड होगा, ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट 4 आवर्स या 5 आवर्स के लिए भूख नहीं लगेगा, डायरेक्टली आपको 1 o'clock लंच टाइम पे भूख लगेगा. You will not binge eat or you will not indulge in any kind of junk food. कोई टी बिस्किट खा के निकलता है सुबह? I hope no. So tea biscuit is a worst kind of breakfast that anyone can have. Please, please, please do not eat biscuits as your breakfast. Biscuits are total maida, unhealthy fat, and lot of sugar that our body doesn't need. Right? Now coming to lunch, क्या होता है आप लोगों के टिफिन में? या फिर रोटी सब्जी? What else? Any variation there? Rice and dal. Okay. Anything else? Salad. Wow. Okay. Salad भी होता है, right? और दही होता है. Great. So टिफिन में अगर आप रोटी सब्जी कैरी करते हो तो again either you have a bowl of curd या फिर पनीर की सब्जी कैरी करो. If you are a non-vegetarian and if you are comfortable eating chicken and fish in your dabba, then that is also fine. Like chicken curry or fish curry, which is homemade along with a little rice. So rice and roti थोड़ा कम करना है. Since we are all in the desk job, हमको उतना requirement rice रोटी का नहीं है. So वहाँ पे आप vegetable या salad का quantity develop करो and उसके साथ maybe a thick dal or maybe a chicken curry, fish curry, egg curry or something like a paneer का सब्जी. So it becomes more balanced. So try and see अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जो रोटी सब्जी अभी रेगुलरली कैरी करते हो उसी के साथ एक डब्बा दही का कैरी करो या उसी के साथ एक डब्बा पनीर का कैरी कर लो तो आपका मोर बैलेंस्ड हो जाएगा या उसी के साथ यू कैन कैरी योर बॉइल्ड एग्स दैट इज आल्सो फाइन इफ यू डोंट वांट टू डू excessive cooking or if you don't have time for that much cooking. Now comes dinner. So dinner में usually what I get to see is कि end of the day सब कुछ काम खत्म हो गया अब मैं आराम से बैठ के खाऊंगी नहीं हम सबका वैसे ही रहता है we Indians are like that कि end of the day we want to indulge in good food and sleep nicely right so dinner is something which is usually what we suggest is उसको जितना light रख सको light रखो जितना अर्ली खा सकते हो लाइक 7 PM 8 PM जितना जल्दी खा सकते हो अर्ली डिनर करो सो दैट योर बॉडी हैज टाइम टू डाइजेस्ट एंड प्लीज डिनर खा के तुरंत लेटना या सोना नहीं है प्लीज अवॉइड डूइंग दैट बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज एक तो हमारा डिनर हैवी होता है उसके ऊपर से इफ यू आर सिटिंग और स्लीपिंग इमीडिएटली आफ्टर डिनर इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस एट ऑल सो ट्राई एंड फोकस दैट आप early जितना early dinner हो सके so if you reach home by 7 or 8 suppose see to it within half an hour you finish your dinner so that your body has like 2-3 hours to process the food that you have eaten and keep a gap of minimum 2 hours between your dinner and bedtime do not sleep immediately after dinner जो belly fat का बात करते हैं ना हम लोग belly fat उधर से ही आता है heavy dinner heavy late night dinner and then no activity post dinner and then sleeping immediately after dinner that's a classic combination that will lead you to a lot of belly fat so preferably avoid that so simple blood test I have mentioned here which you should do on a yearly basis specifically. One is your blood sugar test because we are seeing a lot of cases of pre-diabetes and diabetes nowadays because of the sedentary lifestyle that we are into. So consciously make an effort कि आप अपने sugar testing करो. Lipid profile, which is your cholesterol level, please check for that. Thyroid profile, that will also be important, which is very common in females compared to males. So see to it, you keep checking your thyroid profile. Specifically females who are in the perimenopausal and menopausal age, please monitor your thyroid levels so compulsory. Simple CBC, that is your complete blood count for your hemoglobin levels and iron studies. Vitamin B12 and D3, this is, D3 or B12 की deficiencies बहुत common है. So please monitor yourself. And again, this is something that I will say that females के लिए ज़्यादा important इसलिए है because it will lead to osteoporosis, your muscle deterioration will start happening, and plus the hormonal changes that we go through, it somewhere takes away our good calcium also from the body. So if you're deficient in D3, please supplement yourself and include the dietary sources. And obviously B12 is not only for your hemoglobin and iron levels but also important
for the daily activities, for your energy levels, for your hair, for your skin, for your good sleep, for your good hormonal health, B12 will play an important role. किसी को भी, anyone who has a lot of gut issues like acidity, constipation, bloating, B12 deficiency is very common in those people as well. तो आपको अगर कोई भी पेट की तकलीफ है या कोई भी digestive issues है, तो see to it you monitor your B12 levels, because हमारा B12 हमारे gut से, हमारे digestive tract से absorb होता है. तो अगर वो weak है, तो B12 deficiency is going to be there. Whether you are a vegetarian or a non-vegetarian doesn't matter. Now ये common रहता है vitamins and minerals for women. I hear from a lot of females, you know, कि after 35, after 40, I've started with calcium because it is very important. मुझे बोला है मेरी friend ने कि 40 के बाद compulsory calcium लेना है. तो मैं अभी regularly calcium ले रही हूँ या regularly iron supplement ले रही हूँ. So I would just say when it comes to vitamins and minerals, सेल्फ मेडिकेट मत करो, सेल्फ सप्लीमेंटेशन मत करो जब तक बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है. Get yourself tested for that particular vitamin or mineral, and if you feel you're deficient, then only supplement yourself. Self supplementation is not going to help, specifically supplements like calcium. Don't do that, because अगर वो toxicity हुआ तो वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में accumulate होना start करेगा, be it your joints है या फिर it will come up in the form of renal stone also. So preferably try and see that you know, consciously test yourself and then supplement if you are deficient. So again, just simple vitamin deficiency, vitamin and mineral deficiency जो women में बहुत common रहती है. One is vitamin D. So vitamin D के dietary sources ज़्यादा नहीं है. Simple अगर आप eggs खा रहे हो तो great. But if you're a vegetarian, then there are no dietary sources as such. One is that आपको supplementation लगेगा, and second is that try and see that at least 10 to 15 minutes of sunlight exposure हो, which is like between 11 to 2 p.m. in the morning. So अगर आपके office hours रहते हैं, if you are working in a closed environment and if you have that lunch break, post lunch go for a walk of 10 minutes where you get that exposure to sunlight also for your vitamin D. One. Second, again, B12. For vegetarians, there are no dietary sources. For non-vegetarian, if you are into your chicken, fish and eggs, please eat them regularly, at least 3 to 4 times a week. You don't have to zero down on the non-veg food. For iron and magnesium, iron again, as vegetarians also we have lot of sources, as non-vegetarians also we have lot of sources. Magnesium deficiency बहुत ज़्यादा common है, specifically in females who have D3 deficiency. So see to it that you get yourself tested for serum magnesium also. जिन लोगों को बहुत पाँव दुखते हैं या फिर varicose vein का issue रहता है, उन लोगों का magnesium बहुत कम होता है. तो magnesium supplements helps you there. omega 3 fatty acid is like a healthy fat. So जैसे मैंने बोला, अगर आप coconut खाते हो या walnut खाते हो, almonds खाते हो, that those are all good sources of omega 3. If you are a non-vegetarian, eggs are also a good source of omega 3 if you are eating the yellow. So please, when you eat eggs, eat with the yellow. Do not avoid the yellow part. Iodine is something again very commonly seen in females, and specifically in families also. Reason being, हम लोग सबको लगता है कि वो रॉक सॉल्ट इज अ बेटर काइंड ऑफ अ सॉल्ट, हमको आयोडाइज सॉल्ट नहीं खाना या टाटा सॉल्ट नहीं खाना है, तो हम लोग यूजुअली वो रॉक सॉल्ट खाना स्टार्ट करते हैं. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द रॉक सॉल्ट डजंट हैव आयोडीन टू इट, and iodine deficiency will lead to thyroid problems. So try and see that you have iodized salt. It's very, very important. And calcium, as I said, supplement only if you are deficient. And calcium supplementation जब आप करते हो, तो take it for 3 months, take a break of 1 month, and then take it again for 3 months. So do not see to it you do not over supplement yourself, right? So as I said, supplement should do just that, supplement your existing whole food diet. So आपके diet के beyond आएगा supplement, it is not a substitute for your food, for your normal food. So usually we all go through a lot of hormonal issues, and the simple question that I always get asked is that hormonal health के लिए क्या खाना चाहिए? एक है healthy fat. So never zero down on fat, or don't go for zero oil recipes or zero fat recipe or zero fat diet. And second is protein. ये दो चीज अगर अच्छे quantity में आप खा रहे हो, your hormonal health is going to be great.
be it in any age group that you are into, from adolescence to your perimenopausal or menopausal age, fat and protein is going to play a very, very important role. So this is simple perimenopause and menopause that I am talking about, and most of the females go through a lot of hormonal changes in that phase, and they experience a lot of mood swings, irritability. So for that, as I mentioned, try and see that एक है कि आपके diet पे कभी compromise मत करना. Second रहेगा कि exercise will play a very, very important role, not only just for your physical health, for your mental health. तो अच्छे खाने के साथ एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. सो बीट सिंपल ब्रिस्क वॉक, बीट योगा, या फिर आपको जिम जाना पसंद है तो प्लीज प्लीज ट्राई एंड सी दैट हफ्ते में 2 या 3 बार तो एटलीस्ट आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इफ नॉट ऑल 7 days. इट्स गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे डाले हैं टू मैनेज योर पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज. वन इज आपका ब्लड शुगर नॉर्मल होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए. सो दैट इज द रीजन, कीप मॉनिटरिंग योरसेल्फ. सेकंड इज सी टू इट आप ज्यादा प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड नहीं खा रहे हो, बिकॉज ऑल योर प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड वुड बी हाई इन फैट, हाई इन शुगर. So preferably reduce on that. Third would be stress levels. Stress levels are a major contributing factor towards the hormonal changes. So if you know that you are a restless personality या बहुत जल्दी stress pick up करते हो, then try and see you practice some yoga or some meditation so that it keeps you calm and sane. And sleep is very important. So because हमारा body ना heal होता है, repair होता है if we sleep well. So it has to be a good 6 to 7 hours of quality sleep. Do not compromise on your sleep. And exercise, as I said, अगर आपको strength training पसंद है तो please do that, because we as females tend to lose muscle mass very easily. So strength training would be very important. If not strength training, at least start with a simple brisk walk. Fasting, I would say intermittent fasting is something that we all read a lot about. So intermittent fasting also works for certain cases, not for everyone. So do it under a proper guidance, then obviously it's going to work wonders for you. कुछ सप्लीमेंटेशन पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल एज में इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया. तो वो सप्लीमेंटेशंस डॉक्टर की एडवाइस से आप स्टार्ट कर सकते हो. And as I mentioned at the start, protein and healthy fat in the diet would be very important. So women's health is an important issue, and we all deserve that attention and care. And I hope that next time if I come or if someone else comes, at least you guys are doing a yearly annual checkup, health checkup for yourself, if not for anyone else. One simple thing that I do is I do the testing on my birthday. I give that as a gift to myself. So I think you all can do that on your birthday or any special day. Please try and see, the first thing that you do is you do an annual checkup, right? There's another topic that I'm going to cover today is food labels. हम लोग सब बहुत ज्यादा पैकेट फूड खाते हैं, तो हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें लेबल्स पता होने चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, व्हाट आर वी पुटिंग इन द बॉडी. एंड विद सो मेनी थिंग्स दैट वी रीड अप अबाउट फूड लेबल्स, कि इसमें इतना फैट है, इसमें इतना शुगर है, एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड और हाउ डू वी टीच आवर चिल्ड्रन दैट दिस इज गुड फॉर यू एंड दिस इज बैड फॉर यू, राइट? सो सिंपल थिंग, जैसे सिंपल अगर आप एक जूस का बॉटल भी खरीदते हो, just try and see that obviously आगे तो वो लोग लिखते हैं 100% whole fruit and loaded with vitamins and minerals. When you turn the bottle, it is exactly the opposite. Hardly there is anything that is going to be good for your health, except they are just going to load that bottle with lot of sugar. Now, sugar is something that we don't need. We don't need at all. We get enough sugar from the food that we are eating. So अगर आप लोग बहुत ज़्यादा शक्कर कंज्यूम करते हो घर पे, तो please reduce. Now there are people who will say that we don't eat sugar but we eat jaggery or we eat honey. वो हमारे बहुत ही unprocessed way में we get it from the market and it is a black jaggery and this and that. Please, sugar is sugar at the end of the day, be it in the form of jaggery or honey. You have to either reduce the quantity or zero it down if you're comfortable eating your food without sugar, jaggery and honey. Some common examples that I've picked up here is obviously
फूड लेवल की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि what we are putting in the body, how is it going to help or harm our body from the disease point of view. If you have any food allergies or sensitivity, food labels do help to understand, कि इसमें wheat है या soya है, which may not be good for your health. So one simple examples of food I have picked up here. I talk about something as simple as oats cookies. Now I have too many diabetic patients coming to me and then they will say, evening में या सुबह ना मैं oats cookie खाता हूँ या रागी की cookie खाता हूँ. And when you see the label, now see your label says it all. सबसे first ingredient उसमें wheat flour है, which is 53%, which makes more than 50% of the biscuit, which is wheat flour. Then comes the villain, which is refined palm oil. Now, oil की जब मैं बात करती हूँ ना, never go for refined oils. Even in your basic kitchen cooking, try and avoid using refined oils. Go for cold pressed oils or filtered oils. And plus, palm oil है, palm oil is total no. Now there are two sweeteners that go in, and oats कितना है उसमें 7%. So see the difference between the front label and the back ingredient list. So try and see that you read the ingredient list thoroughly and understand. And if you go to see the amount of additives that have gone in, obviously usme fiber dala hai, millet flour and all is just 1%. And then there are flavoring substances and vitamins and minerals that have gone in. So anything that has numbers to it, vitamins, minerals or flavoring agent, they are all chemicals that we are putting in our body which is not required. So I would say rather than the oats cookie, your simple ghar ke aate ke roti is far better. At least you know what you're putting into it, right? The second thing that I am using here is jam. Now, if you go to see the label, it's a mixed fruit jam, and usme bolte hai ki, you get the fruit nutrients and everything. Now, see the label. The first ingredient mentioned here is sugar. Now, sugar is something that we don't want to consume. So I see many people saying I'm off sugar, I'm zero sugar. फिर वो क्या करते हैं, वो बिस्किट खाते हैं, सॉस खाते हैं, जैम खाते हैं. सो जो आप डे टू डे लाइफ में नहीं खा रहे हो वो इनडायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हो इन पैकेट फूड से, राइट? So if you go to see, there's sugar, there's mixed fruit pulp that has been added, and obviously then there is this acidity regulator and salt and preservatives that have been added. So again, I would say try and see that आप घर पे अगर कोई चटनी वगैरह बनाते हो तो इट्स अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू द जैम. Nutella, this is the most trending product right now, bread and Nutella pre-workout, post-workout. भूख लगा Nutella यूज किया हमने या फिर ऐसे ही स्पून से खाया डब्बे में से. Now look at the ingredients here. The first ingredient is palm oil. Look at the amount of sugar that is going into it. So this is a complete no. So if you're into this product or if you consume this or if you have your gym trainer telling you pre-workout up, bread and peanut butter is again very common. So peanut butter again, there's so many brands which use so much of sugar. Hardly उसमें peanut होता है, sugar ज़्यादा होता है. Until and unless you're making it at home, it's a different story. But the market ones are something that I would not advise. Sorry. Brown bread. So I have so many people who will tell me we don't eat white bread, we eat only brown bread. Now one myth buster here is that हमें जो मार्केट में ब्राउन ब्रेड मिलता है उसमें कलरिंग एजेंट ऐड किया जाता है जिससे उसका कलर ब्राउन होता है. तो आप क्या करते हो, व्हाइट ब्रेड के लिए व्हाइट ब्रेड से ज्यादा पैसा देके अनहेल्दी फूड खा रहे हो. So जब भी सैंडविच खाना है ना, सिंपली white bread खाओ happily. At least you know that you're eating the wrong food. Don't cover up with something like whole wheat bread or brown bread. It is like fooling ourselves and paying more for that. So preferably there's nothing called as brown bread that we get in India until and unless there's someone who bakes it at home and gives you a whole wheat bread. It's a different story. So simple guideline for reading a food label is never trust the front label. One, हमेशा प्रोडक्ट को टर्न करके देखो और उसका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट रहता है ना वो सबसे मैक्सिमम यूज होता है उसमें. अगर शुगर है तो सबसे ज्यादा शुगर है उसमें, व्हीट फ्लावर है तो व्हीट फ्लावर. So read the label properly. Second is never trust a food product which has more than 5 ingredients to it. So अगर more than 5 ingredients है तो you should not buy.
because it's going to be full of additives and fillers. So एक clean product का sign होता है कि उसमें 3-4 ingredients होंगे और उसमें भी core ingredient वो होगा जो आप consume कर रहे हो. तो अगर कोई bread आपको बोल रहा है वो whole wheat flour है, तो 60, 70 या 80% उसमें whole wheat flour होगा, oil होगा और salt होगा. उसके beyond और कुछ नहीं हो सकता. So if उसके beyond अगर label में बहुत कुछ है, then it is a wrong food item or a food product that you are consuming. And obviously, nowadays, all the food products, if you go to see, they are loaded with a lot of sugar and trans fat, hydrogenated fat. Hydrogenated fat is something that we say that's the unhealthiest kind of fat that you can put in your body. Specifically, most of the product would have palm oil, again a cheaper kind of oil that we consume. So अगर आप घर पे अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा oil ही use कर रहे हो, but अगर packet food खा रहे हो, तो somewhere you're compensating for the bad health also there. Yeah, so this is the end, but I am open to questions now. So if anyone has any questions, please feel free to ask. And the questions can be very simple. They don't have to be very scientific. बहुत simple भी questions, silly भी questions रहेंगे, तो please I'm open to answer. Anyone? Yes. Right. How can we vegetarian people can be 12? So for vegetarians, the only solution is supplementation. So we're going for intramuscular injections because उसका absorption better होता है compared to the oral supplement, and उसके dosages होते हैं like you are recommended some 5 injections for B12 on an alternate day. So you take the dose, but after that don't stop. Then take it once in 3 months, which is your maintenance dose. So most of the doctors will tell you कि you know 5 injection का B12 का course कर लो. बट उसके बाद का जो मेंटेनेंस है नो वन विल टेल यू. सो उसके बाद का मेंटेनेंस B12 का होता है कि once in 3 months take another injection. So you will never be deficient. That is one thing. Second is, as I told in the talk also, that if you have any gut issues, कोई भी digestive issues है ना, तो then you are prominent, मतलब you are prone to have lot of B12 deficiency frequently. So अगर gut issues है तो उसको resolve करो. So B12 का maintenance dose है कि after you finish the course, once in 3 months you supplement yourself again. And अगर D3 आप ले रहे हो, तो if you are done with your 8 weeks, 12 weeks course, which is once a week, then continue once a month. Do not stop. Okay, but after the injection, can we take the Oral supplementations is also, or supplement is also fine then. But Medicine also first step is injections only, which will be a better thing to do because आपके results faster होंगे. So अगर आपको hair fall हो रहा है, skin issues हो रहे हैं या पैर दुख रहे हैं, तो वो सारी चीजों के लिए oral will take 1 or 2 months to show results. And intramuscular injection का absorption better होता है. Oral medication से आपको acidity, constipation भी होता है. there is no food for the B12. We all Right. go only for the injection Right, and right. medicine. And that is where I feel non-vegetarians are more blessed. So please आप convert मत हो vegetarian में. अगर आपके कोई religious purpose नहीं है, तो please eat your anda and chicken. It's very good. Thank you, madam. Thank you. Anyone else? So daily use के लिए, as I said, market में you get something like cold pressed oils now. Cold pressed oils में groundnut, coconut, till oil, कोई भी चलेगा. या फिर you get filtered oil also. So जब आप label पढ़ोगे कोई भी packet पे ना, तो उस पे लिखा रहता है filtered, cold pressed या refined. So refined is 100% no. Filtered या cold pressed दोनों में से कोई भी एक आप use कर सकते हो. You can keep rotating the type of oil. And if you are someone who is comfortable with the flavor and taste of coconut oil, then coconut oil is the best that you can use. Second would be homemade ghee. So अगर आप घर पे घी बनाते हो तो great. So preferably go for a full cream milk so that you have that cream for your ghee and you are using the milk for other purposes. So don't go for low fat milk या फिर cow's milk या skim milk, toned milk because then ghee will be a problem. And हमें जो market में घी मिल रहा है again that is totally hydrogenated fat, that is nothing closer to your homemade ghee. आपको वो taste में भी difference समझ में आएगा जब आप घर का घी खाते हो और बाहर का ये डब्बे का खाते हो. Anyone else?
age-wise, how to differentiate our diet means after 40, how to change? Right, right. So एक as I mentioned in the conversation also कि age wise हमारी requirements बहुत अलग रहती है. Like if we are if we are in 30s, our body requirement is far different from someone who is into the 40s. So one is obviously that आपकी जो eating habits है जो हमेशा से रहे हैं home cooked meals के वो same रह सकते हैं, but obviously the macronutrient content will change. So as I said, carbohydrate can go lesser, protein and fat can go higher as we progress because we are reaching a perimenopausal and a menopausal age where the requirement of fat and protein is going to be higher. Plus, our lifestyle is also sedentary where those two macronutrients will play an important role. And third is monitor yourself for deficiencies because calcium deficiency, B12 and D3 deficiencies are very common as we progress with age. Anyone else? Yeah. लिंक शेयर करना है मैंने किसी भी तरह की लिंक नहीं दी है लाइक वो 30. And you like me, people like us, we are below 30. So is it mandatory or is it compulsory है कि हमने supplement से ही ले सकते हैं या फिर ऐसा So supplements, as I mentioned, supplements are not a compulsion. One, and supplement will be something that will come in with your balanced diet or with the food that you eat. So food को कुछ substitute नहीं कर सकता first. So first target for someone who is below 30 is that clean eating करो because below 30 वाले क्या कर रहे हैं अभी जो दिख रहा है they are more into junk and processed food and ordering food. So the first thing is correct your food habits. Second is you have time and space for yourself where you can invest in exercise. So get yourself into that exercise routine so that as you progress, whether you're married, once you get married, whatever the status is, you know that you have to do certain things for yourself, right? So exercise will play an important role. And third most important thing would be sleep. Because ये तीन चीजों पे बहुत बड़ा compromise दिखता है when it comes to someone below 30. And fourth would be obviously test yourself for specifically D3 and B12, which is very common in 20s and 30s also now. Because हम सबका work environment is like we are working in a closed environment. There's no sun exposure. We are traveling by cabs. So again, that is AC. So कहीं पे वो exposure नहीं है तो D3 deficiency बहुत common है. So that is what I would recommend for someone who is below 30. Obviously, supplementation in any age group comes in with testing, not directly. Just because आप 40 and up है, आप directly calcium consume करोगे, no, test yourself, consult your doctor and see whether your body requires or not. If your body has good stores, you may not require a supplementation. Thank you, ma'am. Anyone else? Yes. Ma'am, can you please throw light on insulin sensitivity? Okay, okay. So she asked a very good question actually. And insulin sensitivity, and we call it insulin resistance here. Now, आप लोगों ने इंसुलिन का नाम सुना है पहली बार, right? So इंसुलिन का काम क्या रहता है? I'll just tell you in a simple language. हम जो भी खाना खाते हैं, वो शुगर में कन्वर्ट होता है, okay? अब वो शुगर को सेल्स तक पहुंचने के लिए क्या हेल्प करता है? इंसुलिन, right? अभी this is a classic thing that we see a lot is insulin resistance. इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि या तो बॉडी इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है या फिर इंसुलिन जो की है टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज वो की जाम हो चुका है बिकॉज ऑफ द एक्सेस फैट और नो एक्सरसाइज सेडेंटरी लाइफस्टाइल लॉट ऑफ जंक फूड ऑल दोस थिंग्स सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिवर्सिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स क्या होते हैं you will see that you will have dark neck, dark skin. One simple, visible sign is neck आपका बहुत ज़्यादा dark होगा. और फिर आपको क्या लगेगा कि बहुत गंदा हुआ है तो let me rub it off. But when you rub also, it is going to stay as it is. That's a classic sign of insulin resistance. So your neck, your arms, your finger joints would be all dark, very dark.
सेकंड रहता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में यू विल हैव लॉट ऑफ स्किन टैग्स. फेस पे फीमेल्स में यूजुअली स्किन टैग्स दिखते हैं, विच इज ऑल्सो अ साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. थर्ड इज इंसुलिन रेजिस्टेंस में आप लोगों को शुगर क्रेविंग ज्यादा होगी, सो यू विल फील लाइक ईटिंग लॉट ऑफ शुगरी फूड. एंड फोर्थ इज ऑब्वियसली लॉट ऑफ बेली फैट. These are all classic sign of insulin resistance, which is something that we are seeing a lot in people who are in 20s, 30s and 40s. अब ये insulin resistance important इसलिए है because it is a step which will take you towards pre-diabetes and diabetes. So अगर आप pre-diabetic zone में हो, मतलब आप 6, 7 या 8 साल से insulin resistant हो already, इसीलिए आप अभी pre-diabetic हो. So just to manage insulin resistance, 3 important things that you can do is enough protein in the diet, reduce carbs in the diet, तो रोटी चावल मिलेट भी अगर आप खा रहे हो तो थोड़ा कम. And third is strength training. So if you are someone जिसको लगता है कि जिम जाने से हम बल्कि बच जाएंगे, जिम जाना अनहेल्दी है, प्लीज 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 जिम जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Weight lifting will not make you bulky. In fact, it will help you keep your muscle mass intact. Muscles are your stores for your life. क्योंकि अगर आपके मसल मास अच्छा रहेगा तो आपका बोन हेल्थ अच्छा रहेगा, तो एज यू प्रोग्रेस विथ एज you will not have bone issues. So muscle strengthening exercises will play an important role. It can be in any form, but do it in under proper guidance. I hope your question is answered. Anyone else? No questions? Done? Thank you. So much, Ms. Shah. It was a very inspiring and a very helpful session. Let's give Ms. Shreya Shah a big round of applause. Ms. Shah, your insights have been truly valuable. Today, you reminded us that investing in our health is just as important as investing in our future, because health is wealth. Your guidance has given us the tool to make smarter, healthier choices every day. To continue learning from her expertise, follow Ms. Shreya Shah on Instagram at the rate HealthWell by Shreya Shah for expert tips on nutrition and well-being. Once again, Ms. Shah, thank you for being a part of Stri's journey and for empowering us all today. Let's give her a final round of applause. We have arranged lunch for everyone. So it's been arranged outside. So we'll have a 35 minutes of break, and then we'll again assemble back here. Thank you. एक काम करायचं आता मी त्याला डायरेक्ट लावून डायरेक्ट एकाला लावतो त्याला लेडी का हा दोन्ही केबल ड्यूटी आहे हम येईल ना केबल
performance. Superb. हा कॅप्चर डिवाइस त्याला लावतो त्याला येतं हा त्याच्याकडे तुझा हा सिग्नल येतो का चेक कर ना ते एसडीआयचा इसका सर नहीं आर्क कौन सा आर्क नहीं नहीं वो आ जाएगा मैं रख देता हूँ लाइव में रख देता हूँ आर्क
माहिती आहे ठीक आहे ते डायरेक्ट आहे फक्त आपल्या व्हिडिओ एडिट करायचं व्हिडिओ लागले हो आला आला तुम्ही एकदा चेक करून घ्या किंवा हे पावले इसके अंदर चेक कर लो एक बार आया था वो ओके कैमरा डायरेक्ट आया है खाली वो यूट्यूब पे नहीं जा रहा इसमें कहाँ आ रहा है चेक किया इसमें आएगा तो ही उसमें एक डायरी में आ रहा है वहाँ तो चालू है क्या चालू है देखना वहाँ से कैमरा चालू है अरे एचडीएमआई डाला ना मैंने उसका बहुत हाँ बहुत मगजमारी है एक बार जूम फॉरवर्ड जाते हैं हाँ टीम्स बंद हो जाता आया ना आ रहा है हो गया सामने वाले को दिख रहा है तो वो वॉइस भी चेक करो सब चेक करो रिलीज कर सेव करके है खाली तर येतोय अच्छा तिकडनं तुम्ही बोलणार नाही इधर से उधर जाना चाहिए जा रहा नहीं क्या चेक करो जा रहा नहीं क्या थोड़े बोलणार नाही ना म्हणून टेन्शन नाही बंडल त्याच्या खाली टाकून टाक त्याच्या खाली त्याच्या ऑडिओची कॉल याच्यात आहे
तुला ऑडिओ ना एडिशनल टाकायची गरज आहे, याच्यातून येणार HDMI मधून येणार. आम्ही लाईव्ह साईडला मध्ये मध्ये उतरू. आठवं जात नाही हो. डिफॉल्ट हे काय एचडी करू डिजिटल ना सिग्नल इकडे मला मला तिकडे दाखव. हा MPS वाला येत असेल. मला ओपन करायला थांब थांब. ऊपर करना है, वो जो है ना सेंटर पे है ना, ऊपर करना है. अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट. हाँ. तो अलाइनमेंट कर दोगे ना, तो ऊपर चला जाएगा. ह्याला ऐकायला नाही. ह्याला ऐकायला नाही. कॉल आहे का? ऑडियो कम कर दे रखा है क्या? नहीं कर. ये लिंक किसके पास है सर ओपन कर दो जी वहाँ पे आवाज आ रही है सर इसको करने बोलो, ओपन करने बोलो. मैं बाहर जाके चेक करता हूँ आवाज आ रही है. बंद हो जाएगा फिर अपना कुछ भी बुरा होगा. सर सिर्फ लिंक चालू आ गया है, यहाँ पे वीडियो आ गया है, चालू करना है. ये टॉप अलाइनमेंट हो जाएगा सर. सर ने बोला था वैशाली खुशी क्या है? एक काम છે ને મોકલો ફટાફટ. હા હા. वहाँ पे इसका लिंक चेक करना है. इसका लिंक चेक करो, उसको सामने वाले को बोलो, नहीं तो इधर लिंक चेक करो और वॉइस आ रहेगा, नहीं चेक करो एक बार. ये क्या जा रहा है ये ऑडियो जा रहा है हाँ आप एक आ रहा है लाइव में. ओके ये वही ये वाला live है? ना जो- हाँ. हाँ हाँ लाइव. तो त्यांना लावून बघ तिकडे चेक कर ना. हेडफोन चेक तिकडे आहे. ये मैंने आपको सेंड की थी Thank you.
मेन कुठला लॅपटॉप इसमें से ये YouTube इसमें से रहेगा, बाकी इसमें से चलेगा। प्रेजेंटेशन सब इसमें चलेगा, YouTube इसमें चलेगा। ये ऑडियो इकडे यांनी ओपन केले इसका ना एक म्यूट कर दीजिए, ऑन करिए, एक म्यूट कर नीचे माइक म्यूट करिए। बाहर जाके मेन कुठला लॅपटॉप ये वाला इसमें से लॉगआउट हो जाएगा, एक लिंक भेज के इसमें से लॉगआउट कर दूंगा, तो एक ही चलेगा। Hello, check. Hello, check testing. 1 1 2. Hey, check. Hello, check test. नहीं आ रहा है. त्यातून माहिती पडेल तुला, आता माहिती ना पडणार. ये तैयार ना वीडियो सब इसमें से प्ले होगा। हाँ, सेटिंगला जा, ऑडिओच्या सेटिंगला जा आणि ऑडिओच्या सेटिंग मध्ये जाऊन ते कर, तो इको बंद होऊन जाईल, त्याशिवाय बंद नाही होणार इथं. हे काय एवढ्यासाठी एवढंच आहे. एक फरक गिरा चार्जिंग नहीं है. चार्ज नहीं है क्या? चार्जर दे रहे इसमें. वो नीचे लगा दो चार्जर. पॉइंट है मैडम उधर लगा.
अभी इसका लिंक कैसे निकालूं क्योंकि लाइव है। अभी ये इसका लिंक मुझे भेजना है। हाँ क्लिक करना। गेट शेयरेबल लिंक। अच्छा किसका तिला वाचकी क्लिक करू Check. Hello, check. Check. 1, 2. Hello, check. हेलो फोटो को भी ये वही क्लोज हो गया है ये। मैंने यहाँ पे वो कुछ स्ट्रीमिंग बंद हो गया। यहाँ से चल रही है ना। हाँ मेरे को उसकी लिंक एक्चुअली हमारा यूट्यूब से कनेक्ट है पुअर है सिग्नल। जो चल रही थी पहले में। यही है सिग्नल पुअर है। ये रही। वो क्लोज होगा ना तो फिर लाइव भी क्लोज हो जाएगा। एंड नहीं हुआ है। हाँ बट इसमें अभी वो वही दिखाएगा। सेम सेम लिंक ये वही वाली है इसमें। अब वो इसका सिग्नल पुअर आ रहा है। नहीं तेरा डिवाइस सिलेक्ट करना पड़ेगा ये हो गया। कर रहे हैं शायद हो जाए। फिनिश की भी ना। यूट्यूब का अलग से करना है। 1 मिनट है उसको यूट्यूब से अंदर जाने के करना पड़ेगा तेरे को कर इसको मुझे ला के रखने पड़ेंगे देने के लिए। अभी कैसा आ रहा है इसको सिलेक्ट कर ऑल ओवर से वो इसको देने एक्चुअली इज नॉट इन प्रॉब्लम जो इसमें नहीं लगता है ये वाला बड़ा नहीं लगेगा ना उसमें बहुत होगा। तो एक और इसमें डायरेक्ट ही आता है निकालू यूट्यूब चालू है। नॉट रीजिंग एक्सलेंट कनेक्शन वापस कनेक्शन है। डिवाइस है ना तेरे घड़े पर कि वो वही वाली अभी जो चला फिर से चला रहे तो वो वाला लिंक को फिर से को रीडायरेक्टेड सीधा ब्लैंक स्क्रीन पे कर रहे हैं। सेम लिंक जो अभी आवाज आ रही थी जैसे चेक की थी चल रही डिफॉल्ट आणत नव्हता तर मग तो आणि तो आपल्याकडे पण आहे कॅप्चर डिव्हाइस कोंबडी लेन माहिती 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 अपना ओरिजिनल वाला चालू कर दो।
टेस्टिंग छोड़ दो ओरिजिनल चालू कर दो यूज करने लगे ऐसे मैं बिल्कुल कोडिंग अपने शेयर कर रहा हूँ तो वही फाइनल होकर चालू हो जाएगा check. क्योंकि टेस्टिंग पूरा Hello, करने का check. सेटिंग करने के बाद वापस उसको नेट वापस से पूरा सेटिंग करना पड़ेगा Check. एंड आउटपुट Hello, check. आगे आगे अभी आप चेक करो एक सेकंड में खाली लिंक हो हाँ लिंक ले ले अपना जो फाइनल अभी जो चालू करना है ना वही लिंक चालू कर देते एक बार हैं ऑडियो चेक हो जाएगा ना वीडियो तो ऑडियो सेम सेम लिंक पे सर चेक करो हाँ वही ना नहीं फाइनल लिंक कर देते हैं ना अभी टेस्टिंग में इतना मेहनत कर रहे हैं ना लाइव में जाने के बाद फाइनल में फिर से कुछ ना कुछ सेटिंग देखना है तो एक ही बार में हो जाएगा सर